learned ki not visible, guys. Is it visible or not? VS Code दिख रहा है everyone? You can see the browser. ठीक है. अच्छा. So now, so far हमने क्या किया है? We have learned about tags and all, right? So what we have to do is we have to basically to create the setup or set up our document. We have to basically write tags which are called HTML, and in HTML we have two tags called head and body, right? So we had two tags which were head tag and we had body tag, right? Right. So we had one more tag which was called title. Was it placed in body या फिर head में place करते थे? Was that title placed in head? Right. So we were placing the title in head, and body में we were placing the content that we want to show to our users. Correct? Correct. Now there's a small shortcut for it, which is called emit abbreviation. Basically, you go and write your exclamation mark, and either you press tab or enter, you'll get a template, right? आपको एक बना बनाया template मिलेगा of this HTML, which has the HTML tag, which has the head tag, and which has the body tag, right? Now we can see few more new things like this doc type HTML. See, so once this page loads on browser, right? जब ये browser पे load होगा, what's gonna happen? We're gonna tell our browser कि हमारे document का type is gonna be HTML, and in that we are gonna keep the language as English, right? So EN stands for your English. Okay. Then we have a few more things inside our head, which is basically metadata of our website. थोड़ा सा brief देता हूँ. So basically line number 4 वाला this meta tag, right? This holds the information about char set which says UTF-8, right? Now this UTF-8 basically, again, if I want to just give it in a summary format, it basically stores the information about every sign or symbol or letters that we have created, right? And it assigns a unique code to it, right? So let's say if we have a UTF क्या करता है? It's gonna assign a unique code to it so that system can understand कि yeah, we are trying to reference that. Take, so now this UTF-8 basically uses 8 bits for that, right? 8-bit use करता है encoding to store these information. There are few more varieties like UTF-16 and all, so they store it in 16 bits and all, but we are going to use UTF-8 because this one is most widely used. Take, so it's nothing but this UTF thing stores the information about the symbols and letters and that's it. Take, उसके बाद in next line you can see that we have name, viewport, content, width, device and all. So basically this viewport refers to, let's say if I go and run my file, right? इसको जाके if I run it on live server, we'll be getting this, right, entire screen. Now this screen is represented by body tag. इतना clear है, right? ये जो पूरा screen है, that is basically your body tag, and उसके अंदर we start placing things. So that body tag should have like ये जो view दिख रहा है, right? It basically stretches to that, right? उतने space को this body is gonna take when we give it a viewport, right? So whatever is visible, right? Whatever width and height is visible, it's gonna take that thing entirely. ठीक है? And that initial scale thing, one is basically कि हाँ, by default 100% should be the magnification scale, right? So if we increase this, we'll be magnifying it. Let's say कि 1.5 करता हूँ, तो I would be doing something like this, right? तो इसको जाके if I go and increase it, right? So that magnification. ठीक, तो again it basically just holds the information about our website, basic stuff, nothing much. Take now this thing is not really the point that we want to cover today. Point cover kya karna hai is basically that we have learned about elements and we have learned about boxes, right? We know that we have div jo ki is there to be a container which is gonna hold our stuff. Itna yaad hai everyone why div was there. Take, and this div can hold headings, it can hold paragraphs and all, right? So let's say we have heading 2, let's say I have a paragraph 2, right? So it's gonna hold stuff like this, right?
Then again, have you guys explored few other tag? Let's say I'm going for image tag. Have you tried image tag? किसी ने try किया image tag? ठीक. If not, image is one of those tags जिनको ना it doesn't need a closing tag, right? These are self-closing tags, right? So there are few exceptions to HTML का syntax, which are these self-closing tags. Image is one of those. Right. So let's say if I want to put an image in my document, what I'll do is I'll use an attribute which is called SRC. अब इस SRC में I'll be providing the link कि what kind of image, what's the source of that image is, right? So let's say if I visit a website like Flipkart or all, and in here I go and type mobiles, right? So if I go and type mobiles, and if I pick one, right? So in here, if I go and just open the image in new tab and just copy this image URL, right? So I'm just copying this image URL. I'll go in here and I'll paste that image URL in my source. Abhi, if I go back on my document now, I'll be able to see that image in my box, right? Right. So that's how we use our image tag. Now, let's say if I go and give my div some style, right? मैं चाहता हूँ open my style tag, and this div, I'm going to give it a border of 1 pixel solid black, right? So we're going to create a div wala structure, and it's going to have a border, have the border solid, right? So it has a border, right? Now height ke liye, so this div is just taking the content as space, but is it taking this entire page का width for itself? पूरे page का width ले रहा, right? You can see that we have given border 1 pixel. We haven't given any width. हमने कुछ height नहीं दिया है. तो height के लिए तो it's dynamic. वो जितना भी content होगा ना, it's gonna take the height of that content. But width के लिए it's taking this entire block, right? पूरे block का space it's taking, right? Okay. Let's say if I go and create multiple P's in it, right? तो इसके अंदर if I go and write lorem 5 again, right? And if I give P border also, right? तो अगर मैं P को जाके भी border देता हूँ, and if I go and check, P is also taking this entire space. P भी पूरा space ले रहा है, right? Even though P के अंदर जो content है, it's still just till here, right? So this thing should have easily come in here. यहाँ पे it could have been occupied, but it's taking this entire space, right? That's because P tag, heading tag, div tag fall under a category which is called block level element, right? अब block level element क्या करते हैं? They basically take up this entire space. Right, जितना भी width होगा ना, they are going to take that thing up for themselves. So they are basically blocking the other element to take their space. That's why they are called block level elements. Right. Now, in opposite of block level element, we have something which are called inline level elements. Right. What do I mean by that? Let's say if I go and copy this image, I'm just assuming that this image is a inline type of not inline. अभी के लिए assume करते हैं कि image is a block level element. So by default क्या होने वाला है? The next image is gonna come in next line. Yes. If I assume that image is a block level element, next image should come in next line. Right. So that's an assumption based on block level element. But image क्या होता है ना? It's a type of inline element. So what's gonna happen? अगर मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, and if I go in here ना, the image is gonna come in same line, exact same line, right? So basically, overall HTML में we're gonna have two different types of element. One is gonna be called block level element, which are gonna take this entire space, whereas other one is gonna be called inline element, which will be just taking the space of its content, right? Whatever the width of content it's gonna just take that much space. Okay. So now in block level side, we have a container which is called div, right? उसी तरीके से, if I just copy it and paste it, I'll show you. These divs are going to be on different line, right? So these divs are going to be on different line. उसी तरीके से we have a box or container for our inline level elements, which is called span.
right? Now, let's say if I have this span, and in this span, I'm gonna go and write something. So let's say I'm writing lorem and I'm writing 5. उसी तरीके से I'm gonna quickly create few more spans and I'm gonna put it in, right? And मैं क्या करता हूँ? I'm gonna go and add borders to span also. So if I go back in here, and if I scroll down a bit, you'll see can you guys see the span here? Yeah. Right. So basically, let me remove the upper div. ये वाला, we don't exactly need it for anything. So let me just remove it. Yeah. I hope it's visible. Right. So you can see the span, right? It's not coming in next line, rather वो same line पे it's putting everything. So it is also a type of inline level element. Now, सिर्फ इतना ही difference नहीं है कि inline level elements are gonna come in same line and block level elements are gonna come in different line. There's a bit more difference, that is we would not be able to give span a width or height, right? They won't respect it. What do I mean? Let's say if I pick, if I give this div a class, let's give it a class and I'm gonna call it block container, and इसको जाके मैं बोलता हूँ, let me call it inline container, right? So if I pick my block container, right? If I pick my block container and इसको, if I go and give it some width, right? Let's say 400 pixel. So you are aware, I am aware, it's gonna make itself a 400 pixel, right? Utna width ले लेगा, right? But let's say if I wanna increase the size and all of span tag, so let's say if I pick inline container and if I go and give it a width of 400 pixel, right? So we go back in here, you'll see ki, is it getting 400 width? 400 width ka ho raha hai, right? 400 is this thing, right? Is this thing 400? No, right? So it's always gonna just take up the space of its content. Content में जितना space है ना, it's just gonna take that space up, right? So that's one more difference कि inline level elements are always gonna take the space of content, whereas block level element will take the entire space up until आप उसको कोई width नहीं देते हो, right? If you explicitly give it some width, then only it will be taking this much space, right? So now the small issue that arises is that in a website, right, like Flipkart, let's go and visit Flipkart. In a website like this, we will be needing both these features. We'll be needing inline level element. We will be needing block level element. Yes or no? Right? So let's say if I want to create a structure like this, right, in which every image is in same line. Do I need inline level element for that? Inline level element चाहिए, right? But then these images have p tags also, right? So do you think we need block level elements also, right? So we need both of them feature in harmony, right? For that, what used to happen initially is we were using table format for this, right? So basically हम क्या करते थे, we were creating table and in that table हर एक table data को we were giving these images and all, but that's not really viable, right? क्यों नहीं viable है? Because we will be like at very specific level हम चीजों को style कर रहे होंगे, and that's not something that is expected from us, right? So let's say if I want to make this p tag inline, what I will do is I'll select this p tag, right? And मैं इस p tag को select करूँगा. I'll go in here and I'll write display, right? And display में जाके I'll be writing inline block. Okay, so if I go back in here and if I go in document, are you expecting कि हाँ, like can you observe कि p tag is now taking just the space of this thing, right? Right, p tag is just taking the space of content. Take, let me just show you guys side by side. I think आपने observe नहीं किया, but let's say मैं इतने part को commit कर देता, right? So by default p tag is taking this entire block. ठीक, but let's say if I go and make the display as inline block, तो अभी क्या होगा ना, p tag is just gonna take the space of content, right? But a thing here is that now p tag will lose its property of being a block level element, right? So we don't want this to lose those properties. We want to use everything at the same time,
ठीक, तो उसको फिक्स करने के लिए देयर वाज टू थिंग्स दैट वर क्रिएटेड व्हिच वर कॉल्ड फ्लेक्स एंड ग्रिड. आई होप यू गाइस माइट हैव हर्ड इट सम, फ्लेक्स और ग्रिड के बारे में, राइट. तो बेसिकली फ्लेक्स क्या करता है, इट मेक्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट have the property of inline level element while keeping block properties intact. It doesn't get changed. ठीक, so let's try to understand flex and grid quickly. ठीक, so going forward थोड़ा सा we need to understand few things quickly. वो basically it's the difference between flex and grid, right? So if you ever come across flex, right, flex and then we have our grid, right? So basically let's say कि if you're dealing with a one dimensional structure, right, let's say कि if you want to create a one dimensional structure something like this, right, are we familiar with something that is called navbar? Navbar जानते हो? navbar जानते हो, right? Navbar is basically your navigation bar जैसे Flipkart पे, right? So in here I have search box, I have buttons and all. So this is going to be there in each page, right? अगर मैं ये camera page पे भी, like let's say if I click on camera, right? So if I visit this page, we still have this nav. So that is always going to be there, and what we want is कि we want a nav bar. उसमें let's say if I have 4 divs, so they should be in same line. ठीक, इस तरीके से मैं कुछ चाहता हूँ, तो for this case ना I'll go and use nav, right? Why? Because flex is usually used with one dimension, right? Now what do I mean by one dimension? Basically यहाँ पे we are just dealing with a row. हम सिर्फ एक रो के साथ डील कर रहे हैं, right? Right, तो are we dealing with columns at the same time? नहीं कर रहे कॉलम के साथ, right? So in this case when we are just dealing with one dimension, flex is more or much better to use, right? But let's say if we are going for a grid format, what do I mean by grid format? Let's say I'm visiting Masai School ka website, right? And in here we have a page called investor page, right? So in here, if you guys see this format, right? इस format में we have a row, right? Plus we have columns, right? तो हमारे पास columns भी है and rows भी है, right? So do you think it's a two-dimensional structure? Right? It has rows and columns. It has y and x axis both. ठीक, so for these type of structure, grid is much better to use. ठीक, so basically just wanted to clear that. अभी we'll see कि why that is the case, right? One dimension के लिए why we have to use flex, और two dimension के लिए why we should go with grid. वो देखते हैं. ठीक, तो shall we start with flex folks? Flex के साथ शुरू करें. ठीक, चलो. So I hope inline और block level element के बीच में difference is clear, right? No issue there. ठीक है, चलो. So now let's go and create a new file, and I'm going to call this file as flex.html. Now in here again I'm going to use the template, and यहाँ पे I'm going to go and create some divs, right? So let's say कि if you want to create multiple different tags at same time, right? तो आप क्या कर सकते हो? You can just go and write the tag name. Let's say I want to create div. You will write multiplication वाला sign and will write whatever number you want, right? So let's say I want 6 divs. तो मैं क्या करूँगा? I'll write div and into 6. Right. So what I'll do is I'll be basically creating 6 different divs. Take now what happens with flex is, right? Flex जो property है, it's applied on parent, right? So let's say I have a div which is gonna be parent of these divs, right? Right. So ये div है and it's gonna be parent of these divs. So let me just select these divs. ठीक है. So इसको मैं जाके I'm gonna give it a class of container. Right. So let's say if I want to access these divs, what can I do? What can I write in my style tag? Dot container के अंदर के div. Will this work to select all these divs? Yes, no, yes, no. This will work, right? And इसमें if I go and write width as let's say 100 pixel, or rather let's go with 80 pixel, and height as 80 pixel, and background color as 0, and border as 1 pixel solid black. So I'll be creating these divs with these properties.
है ना, है ना? ओके, नाउ लेट्स से कि मैं कंटेनर को भी कुछ स्टाइल देता हूँ, तो मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ, आई एम गोना गिव इट अ विड्थ ऑफ 100%, राइट? सो बेसिकली क्विकली, बॉडी का विड्थ कितना है? व्हाट्स द विड्थ ऑफ बॉडी? द एंटायर स्क्रीन, जब हमने व्यू कोड डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट दिस, कि दिस एंटायर स्क्रीन इज गोना बी द विड्थ ऑफ बॉडी, राइट? यहां से लेके यहाँ तक, दिस एंटायर थिंग, राइट? एंड बॉडी के अंदर वी हैव अ चाइल्ड विच इज दैट कंटेनर वाला div, राइट? दिस div इज डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दिस बॉडी। तो अगर मैं जाके इस कंटेनर पे इफ आई राइट विड्थ एज 100% ना, तो क्या करेगा, इट विल चेक इट्स पेरेंट विड्थ एंड उस बेसिस पे इट विल सेट इट्स विड्थ एज 100%, राइट? सो इफ आई गो एंड फिक्स द बॉडी, राइट, अगर मैं बॉडी को कुछ विड्थ देता हूँ, लेट्स से आई एम टेलिंग कि बॉडी आपका विड्थ अब से सिर्फ 800 पिक्सल, राइट? तो दिस कंटेनर विल टेक अप दिस विड्थ ऑफ 800 पिक्सल, right? So if I go back in here, let me just quickly run it. Container को let me give it border to pixel, solid teal, ठीक? So let's go and run our file. So if I run my file, right? तो अभी you will see कि जो container है, right? Container is taking just 800 pixels of space, right? But if I remove this thing, body को, if I remove the width, now body will be taking the entire screen का width and container will be taking exact width of its parent, which is 100%, right? तो अभी width is of this entire screen. Make sense? Does that make sense? Make sense? Make sense? ठीक है, ठीक है. Now we have this devs और ये devs next line में आ रहे हैं. Was this expected behavior? Was this an expected behavior? Why? Because div is block level element, so they should be coming next line, right? But let's say if I want to fix this div in a same line, what I'll do is I'll go for the container, basically in divs के parent में जाऊंगा and I'll give it a display of flex, right? So as soon as I go and write flex now, you guys will see कि वो direction is now as a row. So everything is coming in same line, right? So that's basically as easy as it is. जाके बस आपको एक flex लिखना है and you'll be making everything in same line, right? What about height? Up until you guys don't give a specific height na, the height will be taken by the size of content, right? तो अभी content हमारा height में 80 pixel है, तो it's just taking 80 pixel height. Now let's say if I go and give this container a height, right? Height जाके मैं बोलता हूँ इसको 500 pixel. So it's gonna take now the height of 500 pixel. तो जब तक you don't assign a height, it's gonna take that whatever content उसके अंदर. ठीक, ठीक. So now if I go back in here and height को we don't need it for now fixed, तो अभी you will see कि now it's taking this space, right? Now there's one more thing. जैसे ही हम display flex से लिखते हैं, right? It's gonna unlock some properties like flex direction, right? So by default, what do you guys think? क्या direction है? Is it row वाला direction or is it column वाला direction? By default, you guys think row? So if I go and write row in here, do you guys think कि कोई difference आने वाला है? कोई difference आने वाला है? नहीं, right? So if I go back in here, do you see any difference? No, right? So by default, जो flex के direction है ना, it's gonna be row. But let's say if I go and write column in here, right? यहाँ पे जाके if I go and write column, so now everything will be in column format. Right, right. उसी तरीके से we have row reverse and column reverse. Let me show you guys what that do. Let's say कि हम इन divs को some numbers देते हैं, right? It's not terribly important, ज़्यादा use नहीं होता है, but again this is a property, so I'll just show you. Let's say if I go and write column reverse, तो अभी क्या होगा? This 6 is gonna be on top and 1 is gonna be on bottom. Basically ये चीज, this sequence is gonna get reversed, right? So if I go and write column reverse, you'll see that sequence gets reversed. Big, but again, that's not something that we need at very much level. क्यों? क्योंकि if I wanted this block to be at first, I would have written it as that, right? But sometimes if you want to do that, that's a property that can be used. Tick, tick. So basically, yeah, flex direction is there. Now let's say कि if I want to give my boxes some space,
right? So for giving the space, by default flex direction is set to column. No, by default flex direction is set to row, right? Flex लगाने का फायदा क्या है? Now block level element like div will be in same line, right? तो div जैसे block level element को भी हम same line में कर सकते हैं by using flex, right? Right? ठीक है. Now second thing is basically how can we शिफ्ट थिंग्स, राइट? तो लेट्स से कि मुझे इन चीजों को जगह पे लाना है, जैसे आई वांट टू सेंटर देम और लेफ्ट और राइट में करते हैं, तो बेसिकली वी हैव समथिंग जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, देन ओनली दिस थिंग गेट्स अनलॉक्ड. वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट, राइट? एंड इसके अंदर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू सेंटर, फ्रॉम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट. ऑल्दो फ्लेक्स एंड एंड फ्लेक्स स्टार्ट एक जैसी चीजें काम करते हैं. तो लेट्स से इफ आई गो एंड राइट स्टार्ट, राइट? Do you guys see any noticeable change? कोई noticeable change दिख रहा है for flex start? No, no. So let's say if I go and write flex start, right? Again, tell me, do you guys see any noticeable change? No, right? So by default, start is the property that has been applied, right? But let's say कि if I go and write flex end, right? अभी क्या होगा? Now container के end में आ जाएगा whatever content is inside flex. राइट? तो फ्लेक्स के अंदर जितने भी आइटम्स है ना, दे विल बी शिफ्टेड टू द एंड, राइट? उसी तरीके से इफ आई गो एंड राइट सेंटर, व्हाट्स गोना हैपन? एवरी आइटम इज गोना बी इन सेंटर, राइट? बट बेसिकली इन रियल लाइफ सिनेरियो हमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, राइट? तो विल बी नीडिंग स्पेसेस इन थिंग्स, राइट? हमें चीजों के बीच में स्पेस चाहिए होगा. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो एंड राइट space, and space में we have three options. Let's try each one of them. Let's say अगर मैं space around pick करता हूँ, तो now everything has space, right? अब थोड़ा समझने की कोशिश करना. When we write space around ना, what happens? जो starting और end होता है, right? Starting और जो end होता है, ठीक? This wait, not able to access this portion, but जो start और end होता है ना, that is basically exact half size जो कि इन boxes के बीच में space होता है. Right? So let's say if these spaces are 4 ना, these end में और start में are going to be 2. That's the only difference. ठीक, तो that's one of these observable things. Based on आपका what do you want to use, उस तरीके से will be using stuff. Right? So let's say मैं space between लिखता हूँ. Let's go and see if we have any changes. So do we have any changes? राइट? अभी क्या हो रहा है? स्टार्ट एंड एंड से स्पेस हट गया है एंड एवरीथिंग हैज अ इक्वल स्पेस इन बिटवीन, राइट? राइट? वहीं पे इफ आई गो एंड यूज स्पेस इवनली नाउ, you'll see कि टॉप से लेके एंड से लेके बिटवीन एवरीथिंग इज स्पेस्ड इक्वली, राइट? तो हैव वी समवट अचीव्ड समथिंग लाइक दिस, राइट? तो या दैट्स हाउ वी क्रिएट लेआउट, राइट? तो बेसिकली लेआउट जब क्रिएट करना है तो फ्लेक्स गिव्स अस मच मोर कंट्रोल ओवर आवर कंटेंट, जो कि इनलाइन ब्लॉक कभी नहीं दे पाए, राइट? तो मैंने टॉक अबाउट मोर कंट्रोल ओवर कंटेंट ना, लेट्स ट्राई टू डिस्कस समथिंग इन दिस फॉर्मेट. लेट्स से इस div को आई एम गोना कमेंट इट आउट, आई एम गोना क्रिएट अनदर div एंड उसके अंदर आई एम गोना क्रिएट अनदर div, राइट? एंड इसको ऑफ कोर्स आई एम गोना गिव इट अ क्लास ऑफ कंटेंट, right? So कंटेनर के अंदर div I want this thing to be there, that's totally fine, but इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. तो I'm gonna create a new container again. Width is gonna be 100%, but we are gonna use some height, let's say 500 pixels, right? And I go and write display flex. Okay, so if I go in here, right, and let me give container a border, so border is gonna be 1 pixel solid. Sure. Back in here, abhi we have a width of 100% and height of 500 pixels. Let's say मुझे इस box को यहाँ पे center करना. So what should I write in my CSS? Justify content with a center. Justify content with a center, right? तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा justify content with a center.
But let's say if I want to center this div in exact center of parent div, right? You guys might have heard about this question being asked in interviews, ki center a div, or rather how to center a div, right? तो हमने देखा कि horizontally तो we were able to center it, but how the hell do we center it vertically, right? तो basically उस context में we have something which is called align items, right? तो मैं क्या करूंगा, I'll go in here and I'll write align items, right? And in here also you see flex and flex start वाला है, तो we can go and write center and you guys will see कि yeah, this content is centered, right? So can we center a div now? Can we center a div now? Easy है, easy है, ठीक है, ठीक है. So basically, if you want to deal things in this direction, in row का direction, you'll be basically using justify content. और अगर आपको इस direction में use करना होगा, you'll be using align items. Clear है? Clear है? Clear है? तो now let me show you guys कि कितना कंट्रोल होता है हमारे पास इस बॉक्स का विद यूजिंग फ्लेक्स. लेट्स से अगर मुझे इस बॉक्स को एग्जैक्ट यहाँ पे लाना है, कैन यू गाइस थिंक ऑफ जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स की कोई प्रॉपर्टी जो कि ये कर सकते? ओके, तो पहले जस्टिफाई कंटेंट के बारे में बात करते हैं. नाउ इन दिस फॉर्मेट, यार मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार हो रही है. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस फॉर्मेट, राइट? तो इस तरीके से डू आई नीड माई div टू बी इन सेंटर और डू आई नीड माई div टू बी एट द एंड? आई नीड माई div टू बी एट द एंड, एट द एंड. ठीक है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मेट, राइट? ये वाले वर्टिकल एक्सेस की बात करते हैं. तो इन दिस फॉर्मेट डू आई वांट इट इन स्टार्ट, एंड और सेंटर? सेंटर में. तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो एंड राइट जस्टिफाई कंटेंट, दिस थिंग इज गोना बी एंड, एंड ये सेंटर ही रहेगा. तो इफ आई गो बैक इन हियर, अगर मैं अपने ब्राउजर को बोलता हूँ, यू सी नाउ बॉक्स इज देयर, राइट? Okay, let's say कि you wanna put it in here, यहाँ पे. How can I do that? How can I do that? तो justify content इस direction में we want thing in center, in exact center, right? Horizontally हमें वो center चाहिए, but vertically we need it at the end. So basically हमें क्या करना है? In justify content, I'm gonna write center, and in align items, I'm gonna go and write end. So yeah, हमारा box exact at that place. Right? So anyways, see ki how much control do we have over this box? Right? Now, this control can be shifted a bit. Kaise? Let's say if I remove this. Right? So this control is again based on something which is called flex direction. Right? अभी ये बताओ, by default, what's the flex direction? By default flex direction क्या है? By default flex direction क्या है? Row. And if I go and write column in here, तो अभी क्या होगा? Now column will be the flex direction, right? तो जो हमारा justify content and align items है ना, they depend कि हमने क्या choose कर रखा है in our flex direction, right? So let's say कि for now ये वाला arrow is representing your justify content and ये वाला arrow is representing your align items. Am I correct? By default, by default. Right? So I can write कि हाँ, this thing is justify content, and जो ये वाला arrow है, this thing is align items. Right? ये केस सिर्फ तभी होगा जब आपका flex direction है row. Right? Why so? ये जो justify content है ना, it follows a axis which is called main axis. Right? And main axis decide होता है by what direction have you chosen. Let's say हमने रो चूज कर रखा है, तो नाउ मेन एक्सिस विल बी योर रो वाला डायरेक्शन, राइट? तो दिस विल बी योर मेन एक्सिस. ठीक, वहीं पे जो दूसरा एक्सिस होगा ना, दैट थिंग विल बी नाउ कॉल्ड क्रॉस एक्सिस. ठीक, सो जस्टिफाई कंटेंट विल ऑलवेज फॉलो मेन एक्सिस एंड अलाइन आइटम्स विल ऑलवेज फॉलो क्रॉस एक्सिस. ठीक, एंड मेन एक्सिस डिसाइड कैसे होगा?
it will be based on direction. If direction is row, the axis which will be main is horizontal one. ठीक, okay. Now let's say कि I'm gonna draw these axes again. वैसे ही axes बनाता हूँ. But let's say कि अभी जो flex direction है ना, जो flex direction है, वो हमने select किया है column, right? तो now column का direction क्या है? ये वाला. This direction is of column, right? Right? तो अभी main axis क्या होने वाला है? ये वाला होगा, राइट? कॉलम वाला एक्सिस अब मेन एक्सिस हो जाएगा. तो दूसरे एक्सिस का नाम क्या होगा अब? क्रॉस एक्सिस. ठीक. अभी मेन एक्सिस को जस्टिफाई कंटेंट फॉलो करता था या नहीं करता? राइट. जस्टिफाई कंटेंट वाज फॉलोइंग मेन एक्सिस. तो मेन एक्सिस पे अब क्या होगा? जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. जस्टिफाई कंटेंट विल बी देयर, वेयर एज क्रॉस एक्सिस पे आपका अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टी लगने लगी. Right, so let's see ki how these things change and all. So for now assuming कि flex direction जो है वो रो है by default. तो अगर मैं justify content center लिखता हूँ तो let's say कि justify content में end लिखता हूँ. ठीक. justify content end लिखता हूँ तो horizontally हमारा box end पे होने वाला है ना? है ना? horizontally हमारा box end पे होने वाला है as expected. horizontally वो end पे, राइट. ओके, लेट्स से कि मैं जस्टिफाई कंटेंट हटा देता हूं एंड मैं अलाइन आइटम्स को एंड रखता हूं, राइट. तो नाउ बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट जो होने वाला है वो होने वाला है स्टार्ट. तो बॉक्स स्टार्टिंग में होने वाला है, प्लस अलाइन आइटम्स एंड पे लिखा है. तो इन स्क्रीन फॉर्मेट बॉक्स हमारा कुछ इधर होने वाला है. अग्री? 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 So let's say if I go back in here and if I see, हाँ बॉक्स हमारा एग्जैक्ट है that place, राइट. बट लेट्स से अगर मैं जाके ना अपना फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, राइट, कॉलम कर देता हूँ. तो नाउ मेन एक्सिस कौन सा होने वाला है? एक सेकेंड. ये रहा एक एक्सिस, ये रहा दूसरा एक्सिस, और मेन एक्सिस को मैंने दिया 1, इसको दिया 2. सो अभी फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम. 1 मेन एक्सिस है कि 2 मेन एक्सिस? 1 है मेन एक्सिस. 1 है मेन एक्सिस. और मेन एक्सिस को फॉलो क्या करता है? जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स? जस्टिफाई कंटेंट. ठीक. सो अभी क्या होगा ना, इफ आई गो एंड राइट जस्टिफाई कंटेंट एंड, राइट, हमें क्या दिखेगा कि चीजें यहाँ पे आ रही, राइट. तो इज इट एक्टिंग एज अलाइन आइटम्स रो में, राइट. तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क. डायरेक्शन के हिसाब से जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स चेंज देयर प्लेसेस. ठीक है. ठीक है. तो लेट्स अज्यूम कि अभी फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम एंड व्हाट आई वांट इज मैं अपने आइटम को एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ. सो व्हाट शुड आई राइट? पूरा लिख के भेजो. जस्टिफाई कंटेंट क्या होने वाला है और अलाइन आइटम्स क्या होने वाला है. कीप इन माइंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पिक कर रखा है. आराम से सोचो और बताओ. Yes, when we correct. By default, align items and justify content will be start by default. Justify content center, okay, okay. So basically flex direction column है, तो now justify content is gonna be main axis. तो ये होने वाला है justify content. तो हमें मेन एक्सिस के हिसाब से चीज सेंटर में चाहिए, तो यस जस्टिफाई कंटेंट इज गोना बी इन सेंटर. बट क्रॉस एक्सिस जो कि अलाइन आइटम्स है वो हमें एंड पे चाहिए, राइट. सो इफ आई गो एंड राइट जस्टिफाई कंटेंट एज सेंटर एंड अलाइन आइटम्स एज एंड, हमें चीजें एग्जैक्ट एट दिस प्लेस मिले, राइट. सो इफ आई गिव यू गाइस सम रिटन कोड स्निपेट्स कि हाँ गेस करो कहाँ पे हमारा आइटम प्लेस होने वाला है. कैन यू गाइस गेस इट? कैन यू गाइस गेस इट? एवरीवन, एवरीवन, इट्स इजी, राइट. बस ये 3 लाइन का कोड है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. एंड कैन यू गाइस थिंक कि हाँ कितना कंट्रोल है अब हमारे पास बॉक्स का. वेर एवर आई वांट टू प्लेस दैट बॉक्स इन, उसको मैं प्लेस कर सकता हूँ, राइट. इट्स ऑल ऑन अस. ठीक. तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, इट गिव्स यू दिस मच पावर.
ठीक है, विद जस्ट 3 लाइन्स ऑफ कोड, राइट। तो इतना बात क्लियर हो गया, हाउ अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट एंड ऑल इज वर्क। सबको समझ आता है? एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, ठीक है। सो नाउ दिस वाज अबाउट फ्लेक्स। ठीक, अभी लेट्स से कि लेट्स अबैंडन दिस फाइल फॉर नाउ, लेट्स क्रिएट अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन फ्लेक्स एंड ग्रिड, कि ग्रिड यूज ही क्यों करना है। लेट मी राइट समथिंग, इट्स कॉल्ड रैप, राइट। एंड यहाँ पे जाके अगेन आई एम गोना क्रिएट अ div, राइट। एंड ये div को आई एम गोना कॉल इट कंटेनर। एंड इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, आई एम गोना क्रिएट 6 divs अगेन। ठीक, फिर से 6 divs बनाने वाले हैं। एंड नाउ स्टाइल में आते हैं, और स्टाइल में आके ना लेट्स पिक कंटेनर। ठीक, एंड देन आई एम गोना पिक कंटेनर के अंदर का div। Now width I'm gonna apply 80 pixel, height I'm gonna height, okay, this thing, fix this, ठीक है। So height I'm gonna apply 80 pixel फिर से। Background color this time let's go for teal, क्योंकि red देख के बोर हो गए। And let's give it a border of 1 pixel solid black। ठीक, so now we have 6 boxes of width 80 pixel। तो 6 into 80 कितना होता है guys? 6 into 80 480, 480, 460, ओके, ठीक है। 8 6 कितना होता है गाइस? 48 एंड अ 0, सो 480, राइट। लेट्स से कि अगर मैं कंटेनर बनाता हूँ एंड इफ आई गो एंड गिव दिस थिंग अ विड्थ ऑफ 400 पिक्सल, सो डू यू थिंक कि इस कंटेनर में इफ आई गो एंड राइट डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी क्या होने वाला है, एवरी बॉक्सेस इज गोना बी इन सेम डायरेक्शन, राइट। हर एक बॉक्स एकदम सेम डायरेक्शन में आने वाला, right, and they're gonna have a width of 80 pixel in total, वो 480 होता है। and is 480 greater than 400? 480 जो है वो greater है 400 से, right। तो do you think कि हमारे 400 पिक्सल के कंटेनर के अंदर ये सारे divs आने वाले, do you think it can occupy it technically? टेक्निकली ऑक्यूपाई कर सकता है? अगेन टेक्निकली गाइस, ओवरफ्लो वगैरह भूल जाओ, बस टेक्निकली पूछ रहा हूँ। ठीक, तो इट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग इट। ठीक, ओके। सो लेट्स से कि मैं इसको फॉर नाउ आई एम गोना मेक इट 500 पिक्सल, फॉर नाउ इट कैन ऑक्यूपाई इट, राइट। सो लेट मी ओपन दैट फाइल, we quickly run that file। हाँ, ठीक है। सो आई हैव रन दैट फाइल, लेट मी गिव कंटेनर विड्थ आल्सो। तो इसको विड्थ दे दिया, लेट मी गिव इट अ बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, राइट। क्विक पॉप क्विज, लेट्स से 500 पिक्सल का बॉक्स है एंड इसके अंदर आई वांट टू गिव सम पैडिंग, राइट। तो कंटेनर को पैडिंग देना है, तो आई कैन गो एंड राइट पैडिंग, राइट। इफ आई वांट टू गिव पैडिंग टॉप बॉटम 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, हाउ विल आई राइट इट? टॉप और बॉटम पे 5 पिक्सल देना है एंड लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल देना है, हाउ विल आई राइट इट? वेरी गुड, वेरी गुड। All I have to do is I have to write 5 pixel space 10 pixel, so basically 5 pixel will be applied on top and bottom, और left right में जाके this 10 pixel will be applied, right। So if I go back in here, yes, that is working। ठीक है, ठीक है। Now 500 pixel was accumulating these things। Let's say कि अगर मैं इसको जाके 400 pixel बनाता हूँ, right, and let me make it 400 pixel। एक काम करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व इट क्योंकि लाइव सर्वर उसको डायरेक्टली रन कर देगा। तो फॉर दैट ना आई एम गोना डू अ रिफ्रेश। ठीक, सो अभी ये रहा आपका कंटेंट एंड लेट्स से कि मैं इसको 400 पिक्सल के अंदर ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ। ठीक, सो इफ आई गो एंड रिफ्रेश इट, डिड यू गाइस ऑब्जर्व समथिंग? व्हाट वाज इट? व्हाट वाज इट? बॉक्स जो है कंटेनर के बाहर आ रहा है कि दे वर श्रिंकिंग, खुद को श्रिंक कर रहे थे, श्रिंक कर रहे थे। ठीक है, एक और बार देखना आराम से। ठीक, लेट्स से इसको 500 पिक्सल करता हूँ, इट कैन ऑक्यूपाई 480 पिक्सल, राइट। सो इफ आई रिफ्रेश इट बैक, ये रहा हमारा ओरिजिनल शेप बॉक्स का। बट लेट्स से कि अगर मैं इसको 400 करता हूँ, यूल सी कि बॉक्स जो है ना वो श्रिंक कर जाए, राइट। इट्स नॉट मेंटेनिंग इट्स इंटीग्रिटी, right। So to fix that, Flex has a property which is called wrap, right। तो basically बोलता है कि you guys are gonna have two options। एक, if you apply display flex ना,
things are gonna get wrapped based on parent का width. तो if you decrease width ना, अंदर वाले जो flex के items है, they're gonna decrease their width also to be inside that container. वो container के बाहर fall नहीं करेंगे, right? But let's say कि if you wanna get things in next line, आप क्या करोगे? आप जाके लिखोगे flex wrap and you'll write no wrap, right? So if I write no wrap and मैं इसको refresh करता हूँ, let me know if we are seeing any change. कोई change दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, right? But let's say if I go and write wrap, ठीक, अभी देखना, if I go and refresh it, अभी क्या हो रहा है? Now boxes are coming in next line, है ना? And are they maintaining their 80 pixel का shape? Right? So once we write wrap, na, boxes are gonna maintain their shape and they are gonna come in next line. वो next line में आते रहेंगे. ठीक. So now do you think by this way we can create a structure like this? ऐसा लगता है? By this way maybe we can create a structure like this. So somewhat yes, but issue क्या होगा? अभी दिखाता हूँ. Let's say I have 4 boxes here and 2 boxes here, 6. So let's say if I add 4 more boxes, ठीक, अगर मैं जाके 4 और boxes add करता हूँ, ठीक, so what happens is basically if I refresh it, add few more boxes, let me add these two, right? So if I add these boxes, right? अभी क्या हो रहा है? Although we are able to control the formation of these boxes, क्या हम इन boxes का width and height control कर सकते? No, right? We'll have to visit these childs and based on that हमें उनका width and height decide करना पड़ेगा. Yes, agree. But क्या ऐसा possible है कि if you're creating a website, there might be a use case जिसमें we might need एक column to be of 100 pixel, but the other column has to be of 200 pixel. ठीक, उसके बाद the third column wants to be of 100 pixel again. Do you think ऐसा कुछ possible है? Right? Client can ask something like this. But again, if I want to go flex mode with this, do you think that's going to be possible? Right? ठीक, तो if I try to hard code it, right, मैं हर एक div को पकड़ना चालू करूँ and I give them specific weights, I can somewhat do it, but it will be again a very ardent or hard task, right? थोड़ा tough हो जाएगा. So to fix that, what we basically use is grid, right? तो अभी वो difference याद है grid और flex के बीच में? Flex was used for 1 dimension and grid was used for 2 dimension. What kind of layout is this? Is this a 2-dimensional layout? 2-dimensional layout, right? So now in this case, grid is much more useful. ठीक, let's see how, right? चलो तो अभी grid की तरफ shift करते हैं and let's see how. So I'm just gonna copy this thing. ये तो same रहने वाला है and I'm gonna go and create a file called grid.html. ठीक, and in here of course I'm gonna do this, yeah, and let's copy this thing also. So let me just copy style entirely and grid में जाते हैं, यहाँ पे let's put the style, right? And हम flex नहीं रखना चाहते हैं. Now what we rather want is container का width I'm going to keep it as 100%, right? So basically body का entire shape and I want this display to be grid. ठीक, now if I open my live server, right? So is there any visible change that you guys can see? No change. By default जैसे block level element follow कर रहे थे वो follow हो रहा है, right? But अभी क्या होगा? Now once we have written display grid ना, we have unlocked a property which is called grid template, right? And grid template क्या करने वाला है? It's gonna unlock 2 properties which are gonna be grid template row and grid template columns, right?
So let's say if I use grid template columns, अभी क्या होगा? Now in here I can go and write how many columns I want and what's gonna be the width of that column, right? So let's say यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ I won't be needing this thing anymore. I won't be needing width or height for this thing. Let's just remove it, right? अब हम width directly parent से decide कर सकते हैं, right? So if I go in here and if I say कि I want 4 columns with 100 pixel boxes, right? So if I go in here, do you guys see that structure that we were creating by using Flex? Right? Right? And we can do it by grid. But जो हम use case की बात कर रहे थे ना कि we might need a 200 pixel वाला column. So if I go and make this thing 200 pixel and if I go and make this thing 400 pixel, you'll see कि we can very simply update the column का width. Right? And that's not it. हम हर एक boxes का size भी अपडेट कर सकते हैं, राइट? दैट्स बेस्ड ऑन योर कॉलम्स, राइट? माय बैड, रोज, राइट? तो इफ आई पिक ग्रिड टेम्पलेट रोज, राइट, कितने रो है हमारे पास? वी हैव 3 रोज. So what I'll do is I'll go and say कि first row I want it to be 100 pixel, second row I want it to be of 150 pixel, and third row I want it to be of 200 pixel. I won't be needing height even. ठीक, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा and I'll say कि first row is gonna be of height 100 pixel, second row 200 pixel and third row 300 pixel. ठीक, ठीक. तो do we have much more control over 2D structure now, right? रोज और कॉलम्स के बेसिस पे अब हमारे पास कितना ज्यादा कंट्रोल है, कैन यू सी? ठीक. Okay, so let's say if I ask you guys कि folks, see this, we have let's say कि अगर मैं सिर्फ इतने से बॉक्स की बात करता हूँ तो कितने बॉक्सेस है हमारे पास, कितने कार्ड्स हैं हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर रेंज? 8 boxes है. Okay, how many rows do we have? 2 rows. And how many columns do we have? 4, right? So if I go in here, right, and if I go and write, let me just make the boxes to be 8. So we have 2 to 4. I guess this is right. So let's say if I go and write, we need 200 pixel K 4 columns, right? So this is there and this is there, and I want the rows to be 200 pixel also. So what I'll do is 200 pixel. See, so now if I go back in here, na, you guys will notice that I've just created that structure. So easy. Take, if you want some spaces, basically I will be accessing the container and the container ka width 100%, right? So let me give this a border also. So border 1 pixel solid black. Take, now let's say ki, I want to give spaces to these boxes, right? So for space, either you can go with margin, but जब हम grid use करते हैं ना, तो we have again a property unlock, which is called gap. Right? So let's say if I go and write 20 pixel ka gap, what's going to happen from each direction? Na, I'm going to give this thing a gap of 20 pixel. Right? So that's going to be from each direction. Right? But let's say if I write it in this format, let's say the format is basically like this, 20 pixel and 40 pixel. Right? So if I go back in here, can you see the change? Can you see the change? So basically top or bottom में the first range is applying and left and right में the second gap is being applied. Clear है? Clear है? So that gap is between each boxes, right? जो boxes हैं उनके बीच का gap है वो. ठीक, तो do we have any boxes above or left में? कोई boxes है? No boxes are there outside of like these 2 box. Let's say कि मैं इन 2 boxes की बात करता हूँ, इनके left में कोई box है? नहीं. तो in that case, what's gonna happen? You won't be giving any space now. I hope कि आपने margin के साथ भी observe किया होगा. Right? ठीक है.
So that's the case in here, right? So just move these two boxes. So yeah, we have a structure like this. ठीक. Also, there's one more small thing. Let's say कि मैं container को कुछ width देता हूँ, right? So if I make this container a width of 80%, right? So 80% में this is the width, and I want to center this container. So you don't exactly have to write flex and all again and again for this thing. आपको सिर्फ horizontally center करना है ना. So what you can do for block level elements, guys, for block level element क्या करोगे? You can go and write margin auto, right? तो basically margin auto क्या करता है? It makes the left and right side का margin exactly equal. So if your left margin is 20 pixel and right margin is 20 pixel, do you think the box is going to be in center? Right? Left और right margin अगर बराबर हो गए तो that box is going to be in center. तो जो container है, it's in center. Right? So if you just want to do horizontally center things, you can go and write margin auto. ये सिर्फ काम करेगा आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे और ओनली तब काम करेगा व्हेन यू आर गिविंग इट अ विड्थ. क्लियर? Clear? If you want to apply something like this in inline level element, I'll give you a small trick. Basically, have you guys explored about text align center? किसी ने चेक किया text align center क्या है? It basically centers the text, but try applying it on inline level element. You guys will notice कि inline level element भी center हो जाता है, right? So that's sort of a bug with CSS कि with text align center you can center inline level element and text also, right? But सिर्फ horizontally होता है. If you want to fix things horizontally and vertically, क्या करो? Simply इस चीज के पेरेंट को flex दे दो and then justify content center and align item center. That's all. ठीक है? ठीक है? तो now can we create a grid layout like this? Can everyone do that? Easy है? Easy है? So if I want to go with one dimensional structure, should I go with flex or grid? One dimension structure के लिए. Flex more better, more easy to use for one direction. But let's say if I want to go for two-dimensional structure or layout, I'll be going with grid. Take again quickly, how many types of elements based on level do we have in HTML? Two. One is block and one is inline. Right? अभी मैं कुछ statements बोलूंगा, बोलना कि मैं true हूं या false. Block level elements is gonna take the entire horizontal space for itself. True. Again, for inline level element is just gonna take the space for the content that it holds. True. ठीक है. We can fix the height and width of inline level element. No, it does not respect height and width. We can fix height and width of block level element. Correct. ठीक. एक और छोटी सी चीज ध्यान रखना, इनलाइन लेवल एलिमेंट में यू कांट अप्लाई मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम और पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम. ठीक. इट डज नॉट रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम. सिर्फ लेफ्ट एंड राइट कैन वर्क, राइट? तो मार्जिन लेफ्ट एंड राइट कैन वर्क, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट कैन वर्क, बट मार्जिन टॉप एंड पैडिंग टॉप, मार्जिन बॉटम एंड पैडिंग बॉटम नहीं करेगा. ठीक है? ठीक है? तो फ्यू थिंग्स टू नो. या इनलाइन है. ठीक. ग्रिड एरिया. ओके. ठीक है. सो फर्स्ट विल गो विद मीडिया क्वेरीज. ठीक, क्योंकि दैट इज मेन एजेंडा. ग्रिड एरिया इज नॉट इन सो मच यूज नाउ. तो मीडिया क्वेरीज पहले कवर करेंगे एंड इफ वी हैव टाइम लेफ्ट देन मे बी वी कैन कवर ग्रिड एरिया. ठीक. ठीक. Right, and there are few features I am pretty sure कि आपने can, like if I go and write features like this, you'll be seeing कि there are multiple features, right? But these features you guys have to explore on your own, right? MDN पे जाओ, आराम से देखो. Mainly ये features है जो use होते हैं with these properties, right? 90% of time if you are gonna use grid, you'll be just dealing with these three things और कुछ नहीं. ठीक. तो can we at least do that, folks? इतना कर सकते हैं everyone? ठीक है. All right. So now what I'm going to do is I'm going to give you guys a break of 2 minutes and उसके बाद we'll try to create a layout, right? By using flex and grid together. ठीक.
तो हैव अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, उसके बाद लेट्स गो फॉर दैट लेयर। ठीक, सो गाइज एवरीवन गेट टैग बाय 14। चलो। Is everyone back? No, screen share is not off. Your net is maybe lagging अभी. ठीक, everyone back. चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फॉर अदर्स टू गेट बैक. कैन वी अप्लाई बोथ ग्रिड एंड फ्लेक्स टू सेम पेरेंट? अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप लोग खुद आंसर करोगे. लेट्स से कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिख रखा है, ठीक, एंड उसके बाद जाके मैं लाइन नंबर 16 पे जाके लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स. आपके हिसाब से विच प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड ना? फ्लेक्स, राइट. तो सेम पेरेंट पे सेम टू सेम एट्रीब्यूट अलग अलग तो नहीं दे सकते ना, राइट. तो आई होप दैट आंसर्स इट, है ना. सेम पेरेंट पे अप्लाई नहीं करो, ठीक है. बट अगेन इफ यू क्रिएट अ पेरेंट ऑफ दैट पेरेंट, फिर वो स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट. तो फ्लेक्स एंड ग्रिड आर यूज टुगेदर इन वेबसाइट्स बट नॉट इन एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, राइट. डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है. आई होप सबको ये आ गया वापस. कैन यू गाइज राइट वन इन चैट सो दैट आई नो कि हाँ वापस आ गए एवरीवन, ठीक. और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है? ठीक है, चलो, वेरी गुड. ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव डिस्कस्ड कि हाँ लेआउट कैसे बनाते हैं. लेट्स से कि वी हैव बीन टोल्ड ऐसा कुछ वेबसाइट बनाना है इन विच वी आर गोना हैव अ nav bar, राइट. तो हमारे पास एक nav bar होगा एंड दैट nav bar शुड हैव 6 buttons, राइट. सो बस ये ध्यान रखो कि दीज buttons आर देयर इनटू 6. ठीक, मैं 6 बटन नहीं बनाने वाला, इट विल टेक टाइम. And below this nav bar we have product boxes जिसमें we are gonna have a grid of product boxes, ठीक. तो ये रहा प्रोडक्ट बॉक्स और ये रहा प्रोडक्ट बॉक्स. उसी तरीके से we are gonna have multiple different rows, right. In total we are gonna have 6 rows, ठीक. And how many columns do we have? यहाँ पे 3 बनाए but we are gonna have 4. Right. So can we create a structure like this by now, given that we know flex और grid दोनों जानते हैं, ठीक. So ठीक है, overall what I'm thinking is this nav bar will be one parent and then below that nav bar we are gonna have one more parent जो कि होगा एक दूसरा कंटेंट. Now in this nav bar what kind of display do we want? कौन सा डिस्प्ले चाहिए nav bar के अंदर? फ्लेक्स, फ्लेक्स. एंड ये जो कंटेंट वाला कंटेनर है इसके अंदर कैसा डिस्प्ले चाहिए होगा? ग्रेट. चलो, तो लेट्स गो एंड क्रिएट अ वेब पेज फॉर आवर्स.
राइट? तो लेट्स से वेब पेज 1 लिखता हूँ मैं और इसको बोलता हूँ वेब पेज 1.html. नाउ इन हियर वी आर गोना हैव टू पेरेंट्स. तो मैं ये कंटेनर बनाता हूँ. दिस थिंग इज गोना बी कॉल्ड navbar वाला कंटेनर, and the second div will be there and it will be called content wala container. ठीक, navbar वाले container में we need 6 buttons, right? So I'm gonna write button into 6. ठीक, so there you go. I have 6 buttons. एक साथ if I wanna type in them, so let's say if I just pick this, so space ठीक, and again I'll pick this thing and I'll do a control D and I'll write press me. ठीक, so yeah, we have 6 different buttons, right? अभी मैं दिखाता हूँ बटन कैसे दिखने वाले हैं and you guys tell me what kind of element button is, right? So let's run this live server and yeah, tell me, is it block or is it inline? Buttons inline, right? ठीक है. So now in our content container हमें क्या चाहिए? We need multiple divs. For now, let's quickly design our navbar. ठीक, so I'm gonna have a style, right? And style tag के अंदर I'm gonna pick navbar के अंदर का container, and in here I want the width to be 100%, right? And background color to be teal. ठीक, so if I go back in here and if I check my this thing, yeah, so it has a background color of teal. Then I want the padding to be there and not left. Padding top bottom में I want 10 pixel and left right में I don't exactly want anything for now क्योंकि हम उस पे flex लगाएंगे तो we can use space around and all, right? तो padding सिर्फ top और bottom पे हमें 10 pixel चाहिए. So if I go back in here, that is being applied. ठीक, then padding, let's say button, let's design button also. So navbar container के अंदर के button, let's say कि I want these buttons to have background color to be tomato and उसके अंदर जो text है I want that to be white, right? So yeah, we have that. Then ये buttons पे by default do we have a border? Button के पास by default borders है everyone है. तो if I want to remove that border, मुझे border चाहिए ही नहीं, what should I write? Should I write none? I don't want any borders, है ना? है ना? So yeah, I'll be writing border none. If I go back, there is no more borders. Now I will be needing padding in these buttons. अंदर से कुछ padding चाहिए. So I'm gonna go and write padding. Top bottom से I need 5 pixel. Left and right से I need 8 pixel. And I want the font size to be 17 pixel. Normal से थोड़ा सा बड़ा. So yeah, we have these buttons. Again, last notes, if you guys have read, I have put a note जिसमें I told you guys to explore some CSS. याद है? तो did you guys explore border radius? Border radius check किया क्या किसी ने? Right? So it's a very nice tool. आप क्या करोगे? If you write border radius ना, now we can give that curve to our borders. So let's say मैं इस पे जाके लिखता हूँ 10 pixel. You'll see कि our buttons will have sharp edges की बजाय we have a curved edge. ठीक, that's fine. Now we are gonna apply flex in it, right? तो यहाँ पे जाके I'm gonna write display flex. ठीक, तो given that buttons already inline level elements थे, इसके अंदर की चीजें are still gonna be like this, but I want everything in center. So what I'm gonna do is I'm gonna write justify content and I'm gonna write space evenly, right? तो हर एक चीज will be spaced even. बढ़िया है? Fine, fine, fine. I'm not able to see your screen. Might be issue with your internet because everyone else is able to see it. ठीक, तो please try it. एक बार refresh करो maybe internet को, you'll be able to see. ठीक है. So I think we can give a bit more padding, right? Navbar में top में थोड़ा सा padding देते हैं. तो let's say we need somewhat 20 pixel padding, right? Okay, this looks much better. ठीक है, तो navbar को तो इंतजाम हो गया. Now we need a box below navbar जिसके पास वो कंटेंट होने वाला है, right? This was the design that we were following. ठीक है, so first let's design our div, right? तो ये जो div होने वाला है इसके अंदर it's gonna hold stuff like this,
ठीक, तो लेट्स से इफ आई हैव अ div, कुछ इस तरीके का होने वाला है. It's gonna be something like this, but rather than these photos ना, we're gonna have product का photo and then product का title and then product का price, right? Because हम e-commerce website बना रहे हैं. तो let's do one thing. यहाँ पे let's create a border for box first. तो एक box में I will be needing a image, right? I'll be needing image of the product. तो image में जाके I'll be writing a SRC. Right, and SRC में let's get the image, so I'm gonna just pick this image, just paste it in, right? And उसके बाद I'll be needing P, right? तो I'll be needing a title for the product, right? Now let's say कि product title में I'm writing mobile. ठीक, I want just this part of title to be bold. Do I have a tag in HTML that can do it? किसी को पता है? B tag or bold tag, right? So what I'll do is I'll write a B tag and उसके अंदर I'll take this thing X and I'll paste it in there. ठीक, उसी तरीके से we want one more structure जिसमें हमें चाहिए product का price, right? So for now, let's keep it 25K. Right, ठीक है. So let's get back in our document. We have image, we have product का title and we have product का price. ठीक है. ठीक है. Now what I'm gonna do is I'm just gonna copy this div, right? ये div को copy करूंगा and I'm gonna paste it multiple times over, right? So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक, guys, 16 products है. अगर मैं 4 कॉलम बनाता हूँ, how many rows am I gonna get? 4 rows. ठीक, अच्छा. अब थोड़ा ये डेवलपर के फॉर्मेट में सोचना कि इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, राइट, एंड वो वेबसाइट में करेंटली इन 2024 दे हैव 4 मिलियन प्रोडक्ट्स. ठीक, तो ये प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं कि इट्स गोना मेंटेन दैट ओनली 4 मिलियन ही रहने वाले? It's gonna increase, right? So if I go and write grid template row for height in this thing, क्या होने वाला है? What's gonna happen is we will have to again go and write those rows multiple times, right? So what I wanna tell you is, let's say, चलो पहले इस content container को pick करते हैं, dot content container, and क्या करना है? Content container के अंदर I'm gonna apply display grid. ठीक, and display grid के बाद if I want 4 columns, what I'm gonna do is I'm gonna write grid template columns, and let's say हर एक column should be of 250 pixels. So I'm gonna write something like this, something like this, something like this, right? But again, this thing is repetitive, right? बार बार same चीज लिख रहे हैं. If we want to increase the column, हमें manually जाके फिर से इसको upgrade करना पड़ेगा. So rather than that, we have something which is called repeat, right? तो ये repeat is sort of a function. इसके अंदर it takes 2 things. पहला, it takes how many columns do you want. So let's say I want 4 columns, and then after a comma it takes what is gonna be the width of these columns. So let's say कि मुझे 250 पिक्सल का columns. So I'll be going with this. If I go back, you will see कि हाँ हमारे पास 4 different boxes आ गए, and उनका जो width है ना, that is gonna be 250 pixel. ठीक, तो is this thing saving us time again, right? ठीक है. ठीक है, तो let's fix the CSS quickly. So basically what I want is dot container के अंदर जो div है, right, उसके अंदर div के अंदर जो image है, I want to take the space of exact parent, right? तो अगर image पे जाके if I write width as 100%, will it take the exact space of div? Parent का exact space लेगा. And what's the width of parent? 250 pixel, right? The image pick करूँगा and I give it a width of 100. So if I go back, ठीक है, that width is being fixed and I can go and write a gap in here. तो यहाँ पे let's say if I go and write gap of let's say 20 pixel. ठीक, so we are gonna have a
gap of overall 20 pixel everywhere. है ना? Clear? Guys, just give me a second. Someone's at door. Sorry about that. चलो. So what I was coming at is basically जो ये gap है 20 pixel, right? So we are applying this gap in here. But again, 20 pixel is not something that we usually go with grid. हम basically थोड़ा सा उसको we make it dynamic, right? So let's say content container को let's give it a width and let's say मैं इसको बोलता हूँ 80%, right? And I want to give it a border of 1 pixel solid or let's say 2 pixel solid midnight blue. ठीक. So अगर मैं जाके इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखो ये रहा बॉर्डर, राइट? सो 80% जो है दैट इज विड्थ ऑफ कंटेनर, बट हमारा जो कंटेनर के अंदर कंटेंट है इज इट ओवरफ्लोइंग, कंटेनर के बाहर जा रहे हैं, राइट? सो दिस शुड बी डायनामिक, राइट? तो ये कैसे फिक्स होगा? रादर देन यूजिंग पिक्सल ना, इन ग्रिड व्हेन वी आर यूजिंग रिपीट ना, वी गो एंड यूज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फ्रैक्शन, राइट? हम परसेंटेज भी नहीं यूज करते हैं, वी डोंट यूज 25% और समथिंग, वी गो एंड यूज फ्रैक्शन. क्यों? लेट मी एक्सप्लेन यू इन. So let's say if I have a parent which has a width of 400 pixel. So if I write 100 pixel, it's gonna be representing this entire 400 pixel, है ना? है ना? Now अगर मैं इसके चाइल्ड को जाके बोलता हूँ कि you guys are gonna have 25%, 25%, 25% and 25%. So वो equally divide कर देगा इस 400 पिक्सल को in 25%. Is that's gonna happen? तो कितना कितना आएगा हर एक पे? 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल. बट लेट्स से मैं जाके उसको कुछ गैप देता हूँ, राइट? अगर मैं जाके इसको गैप देता हूँ 20 पिक्सल, so is this gap gonna be added also? 25% के साथ गैप भी ऐड होगा, तो फाइनली 400 पिक्सल तो ये 25% बनाएगा, एंड दिस 20 पिक्सल का गैप इज गोना बी अटैच्ड इन लेफ्ट एंड राइट ऑफ ईच बॉक्स. So finally we'll be having something which is going to be greater than 400 pixel. Now that's not something that we want. हमें अभी भी overflow नहीं कराना है. We want things in our container. So rather than going for this thing, what we do is we go for fraction, right? अभी fraction क्या होता है? Let's say if I go and write one fraction, तो basically क्या होगा? 400 divide होगा by 1. So it's going to be coming as 400 pixel only. Right? So one fraction is going to be as 400 pixel, but let's say मैं यहाँ पे जाके if I write one fraction, one fraction, one fraction and one fraction, so I'm dividing this 400 pixel 4 times over. 4 fractions में divide कर रहा हूँ. I'm gonna have 100 pixels each, but fraction is dynamic. अगर आप gap apply करते हो ना, तो what it does, rather than increasing the size of child container, वो parent container में से वो size decrease कर देता है. तो what it's gonna do is, if you go and give gap ना, वो parent container का size it will take in decreased format only. तो अभी क्या होगा? Now if I have applied gap, now parent will be considered as 320 pixel, and उसके अंदर one fraction की चीज is gonna be divided based on 320 pixel, something that we were not getting in percentage, right? So yeah, it is making the content to be shrink. So that's why when you use grid na, you guys will notice कि fraction is being used a lot. That's the reason, क्योंकि it prevents the overflowing. So let's say I have 4 columns and उसको मैं divide करना चाहता हूँ in a fraction. So it's gonna divide those 4 columns in equal fraction. 4 equal fraction में divide कर देगा. So if I go back in here, now is everything exactly equally placed? हर एक चीज equally placed है, right? अच्छा. Now let's say if I go and increase the gap.
right? 20 pixel के बजाय if I go and write 40 pixel. So do you think कि it's overflowing या फिर gap के हिसाब से it's dynamically updating itself? वो dynamically update कर. तो that's a plus point of using fraction. Now मैंने अपने container div को width दिया है 80% and if I just want it to be horizontally center, what's the thing that I can use? बस horizontally center करना है, not vertically. Margin auto. So if I go and write margin auto in content container margin, and it's gonna be all right. So I'm gonna center this box. Take and plus let's say I want the image to be a bit smaller, तो image को थोड़ा सा 80% कर देते हैं, ठीक है? Looks much better, right? ठीक है, तो we can fix this. Now let's give this div a border. So you can access content container, उसके अंदर का div, and I'm gonna give it a border of 1 pixel solid. ठीक, चलो back in here. अभी if I wanna center this image text, कैसे करूँगा center? Margin auto? नहीं. Margin auto is applicable only on block level elements. So what I'll do is I'll write text align center, but you guys will notice कि text align center सिर्फ text को center में नहीं करेगा, image को भी center में करेगा, right? First let's see and then we'll be discussing. तो text align center अगर लिखता हूँ तो you guys will notice कि image भी center में आ गया, right? So basically text align center also centers inline level element, right? तो अभी टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों लिखा? बिकॉज वी कैन गो फॉर फ्लेक्स और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे. तो रादर देन राइटिंग 2 लाइन वी कैन जस्ट राइट 1 लाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि कंडीशन क्या थी? वी जस्ट वांट टू सेंटर इट हॉरिजॉन्टली, दैट्स ठीक. ठीक. व्हाई इमेज? आई एम नॉट श्योर क्या पूछना चाहते हो. तो बेसिकली इफ यू आर आस्किंग व्हाई इमेज इज गेटिंग सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हैज अ सॉर्ट ऑफ बग जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को भी सेंटर कर देता है. तो सिर्फ इमेज नहीं, स्पैन में लगाओ, बटन में लगाओ, इट विल गेट सेंटर्ड इनसाइड अ कंटेनर. ठीक. ठीक, ऑल गुड यहाँ तक. तो वैसे कि कितने इजीली वी हैव क्रिएटेड अ लेआउट लाइक दिस, जो कि यू कैन सी इन फ्लिपकार्ट्स एंड right? So it's as easy as you guys see, right? But then again, there's a small issue. अगर मैं Flipkart पे जाऊँ and if I scroll down, right? nav bar भी scroll ऊपर हो रहा है कि nav bar एक जगह पे fixed है? It's fixed, right? So basically we have a property which is called position, right? Now position में क्या होता है? You can go and apply it on your nav bar container. इसमें we can go and write position, right? तो it has multiple things. By default position जो है वो static होता है, right? What position we are gonna use is gonna be called fixed. तो basically जब हम fixed लिखते हैं ना, तो क्या होता है? This entire thing, ये जो nav bar है, it's taken out from this document. वो document से बाहर निकाल के व्यू पोर्ट पे, व्यू पोर्ट याद है? व्यू पोर्ट, ये जो बॉडी है, बॉडी पूरा बॉडी व्यू पोर्ट पे लाके रख देता है, डॉक्यूमेंट से निकाल देता है. तो वंस यू आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट, अगर ये चीज डॉक्यूमेंट से रिमूव हो गई, इजंट इट नेचुरल कि कंटेंट कंटेनर इसका स्पेस ले लेगा? कंटेंट कंटेनर इज गोना ऑक्यूपाई दैट स्पेस, राइट? तो यू गाइस विल नोटिस कि हाँ, कंटेंट कंटेनर ने उस नैव बार का स्पेस ले लिया, बिकॉज वी हैव अप्लाइड कहा गया पोजिशन फिक्स्ड ऑन. ठीक. नाउ whenever we use position other than static, we unlock 4 more features which are called top, bottom, left, right. Right? वो कैसे यूज होता है? Now you'll see कि top से और left से there is some space in there, right? तो what I can do is I will write top and मैं क्या बोलूंगा कि top आप 0 कर दो and जो left है उसको भी आप 0 पिक्सल कर दो. So what's gonna happen? टॉप से और लेफ्ट से जितना भी बाय डिफॉल्ट स्पेस दिया गया था ना वो रिमूव हो जाएगा. तो बाय डिफॉल्ट जो भी स्पेस था इट्स गेटिंग रिमूव्ड. एंड नाउ यू गाइस विल नोटिस कि इफ आई स्क्रॉल डाउन ना, nav bar is still fixed there. It's still there, right? So that's how we apply that thing.
ठीक, अभी again there are gonna be few more properties in position like absolute and relative. I'll give you a bit hint, but again वो एक बार discover कर, right? Sticky is not used much. क्यों नहीं use होता है? Sticky is gonna do something like fixed only, but क्या होता है ना कि sticky is more of applied. Let's say कि I wanted a box in here, right? यहाँ पे let's say कि if I just visit this website first time और ये box यहाँ पे है, then if I want to scroll down, तो scroll down करने पे this box will be scrolled up to यहाँ पे and then it will get fixed up in. तो sticky is used in those situations. ठीक, if you want to just fix something at viewport, you will be going with fixed. ठीक, yes, मिहिर उसके बारे में अभी डील करते हैं. तो प्रोडक्ट अभी चला गया ऊपर. हाउ कैन आई फिक्स दिस? इजी है. ऑल वी हैव टू डू इज कंटेंट कंटेनर में जाके एक मार्जिन टॉप दे दूंगा, राइट? तो मार्जिन टॉप लेट्स से 100 पिक्सल है. तो बेसिकली ऊपर से वी आर गोना गिव दिस थिंग अ मार्जिन. I'll have to apply it after auto actually. So let me just pick this and let me apply it. Take yeah, you have that. तो top से we are giving it 100 pixel of margin. ठीक, तो अभी फिक्स हो गया, फर्स्ट रो कट होने वाला, राइट? वी जस्ट हैव टू अप्लाई व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार. जितना आपने सीख लिया है ना, यू कैन क्रिएट वेबसाइट और एनी लेआउट दैट यू नो बाय नाउ. ठीक, ऑल यू हैव टू डू इज थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है एंड यू कैन अप्लाई इट एवरीथिंग. ठीक, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिमूव दिस बॉर्डर, राइट? पेरेंट में से ये बॉर्डर हटा देते हैं, इट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस. एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अप्लाई सम शैडो टू इट, right? So shadow basically what I mean is box shadow MDN rather. If I click on this, right? So we basically can apply shadow to our boxes, right? Shadow matlab, you see this box has a certain shadow, right? So we can do something like that. So there are multiple options you can play around that. Let's say if I just pick this thing, right? मैं ये box shadow pick करता हूँ and what I'm gonna do is I'm gonna just paste it in. तो कंटेंट कंटेनर के अंदर div और उसमें बॉक्स शैडो मैंने रख दिया रेड. सो इफ आई गो बैक इन हियर और अपने प्रोडक्ट को देखो, तो इट हैज अ बॉर्डर बॉक्स शैडो ऑफ दैट. इट डज नॉट लुक्स नाइस. लेट्स फिक्स द कलर against border, right? So that would look much better. ठीक, looks fine. Now we won't be needing the border. तो अभी क्या करते हैं, बॉर्डर को भी रिमूव कर देते हैं. ठीक, so there, right? So this is how you can create any layout that you can think of, right? Abhi, let's say if I ask you guys to create a layout like this, can we easily do that? Easily, right? ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसको डिवाइड कर देना है स्मॉल सब टास्क में. तो लेट्स से कि अगर मैं फ्लिपकार्ट का ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इफ आई पिक दिस वाला प्रोडक्ट, तो वी हैव अ बॉक्स लाइक दिस, राइट? वो बॉक्सेस 3 स्मॉल चाइल्ड्स में या फिर एलिमेंट्स में या फिर आइटम्स में डिवाइडेड है. एक ये रहा, देन एक ये रहा, देन एक ये रहा, राइट? तो दीज आर 3 डिव्स और ये कंटेनर पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख रखा है एंड बाकी चीजें आर प्लेस्ड इन दोज डिव्स. नाउ कैन यू इमेजिन इट? अब इमेजिन हो रहा है एवरीवन? सो नाउ whenever you go and check a website ना, अब आप उस फॉर्मेट में सोचना कि हाँ ये वेबसाइट को मैं बना कैसे सकता, right? So if you're visiting masaischool.com, you should be thinking in terms कि हाँ ये वाला layout है ना, how can I achieve this, right? So let's say if I ask you guys कि ये वाला layout है, इसको achieve करो, कैसे करोगे? It has a parent container. It has a parent container. वो parent container में we have 3 divs which have display flex property applied और हर एक में you can go and fix things. That's all. That's all. That's all. Right? Right? So that's how you can use stuff for your advantage. Take now there's one more small thing that is used which is basically for now हम इसको अपने सिस्टम के व्यू में देख रहे हैं, अपने पीसी के व्यू में देख रहे हैं, राइट? तो स्क्रीन इज बिग, स्क्रीन बड़ा है, बट लेट्स से कि अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, राइट? सो इफ आई गो एंड इंस्पेक्ट इट एंड मैं अपने स्क्रीन को छोटा करते जा, राइट? तो दिस इज गेटिंग डायनेमिकली स्मॉल. क्यों? क्योंकि वी हैव यूज्ड फ्रैक्शन, राइट?
तो दिख रहा है फ्रैक्शन के बेसिस पे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट 25% पे डिवाइड होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। बट लेट्स से कि जैसे जैसे छोटा कर रहा हूँ, इज दिस थिंग लाइक मोर रीडेबल, या फिर अगर सिर्फ 2 रो दिखाते बट साइज बड़ा होता, 2 कॉलम्स दिखाते बट साइज बड़ा होता, वुड दैट बी मोर रीडेबल? Right? So basically we have something which is called media queries which can help us in this thing, right? और वो कैसे help करता है? You'll notice, यहाँ पे notice करना, you'll see a width and height system, right? So if I make it small and big, and I see कि width and height is there, some width and height, some width and height, right? So we have a certain width and height which we can use to make our website responsive, right? So let me create a boots.txt जहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमें डिस्कस करनी, ठीक? सो लेट्स से कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज स्क्रीन, हम थिएटर वाली स्क्रीन के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लैपटॉप्स एंड ऑल, राइट? तो वी कैन अज्यूम कि इट्स अराउंड 1400 पिक्सल, 1400 पिक्सल के पास होगा, right? Right, then screen can again depend on whatever that thing is. So rather than giving it a specific value ना, हम क्या करते हैं, हम screens को एक range देते हैं. So we can say कि this large screen is gonna be of range, let's say it's gonna start from 1000 pixel to 4 or let's say 1900 pixel. तो is this thing much better या फिर एक specific value देना better? Range is much better, right? Then उसके बाद large screen के बाद then we'll have medium screens like tabs and all. So this thing can have a range of 600 pixel to आपका 1000 pixel. Now this is tentative, हम expect कर, this thing is totally dependent on you, क्या range रखना है आप, ठीक है? Then let's say we have small screens, right? तो I'll say कि हाँ, small screens are basically phones जिसमें 300 pixels से लेके 600 pixels तक we have our stuff. Right? So let's say these are the ranges, and based on these ranges ना, हम अपनी चीजें चेंज करना चाहते हैं. तो what I can do is I'll go in our web page one, and in here I'll write something which is called @media. Right? अभी ये मीडिया क्या करने वाला है? It's gonna unlock a feature which is called responsiveness. ठीक, अभी मीडिया के बाद I'll give a space and I'll have to type what kind of screen are we expecting, right? So this thing can be printer, this thing can be screen, but to play it safe हम क्या कह रहे हैं, it accepts all kind of screens, तो हमने लिखा all, ठीक? And then after that I'll write a and I'll start writing property कि guys हमें max width चाहिए. I will write a range. So let's say कि मुझे max width चाहिए. First बाय डिफॉल्ट हमने इस स्क्रीन के बारे में तो लिख रखा है. लेट्स स्टार्ट विद मीडियम स्क्रीन, राइट? तो मीडियम स्क्रीन पे मुझे मैक्स विड्थ चाहिए 1000, नहीं 1000 नहीं, लेट्स से 900 पिक्सल, एंड दिस, एंड मिनिमम विड्थ जो होने वाला है स्क्रीन का, दैट इज गोना बी लेट्स से 550 पिक्सल, ठीक? तो हमने क्या किया, वी हैव डिफाइंड अ रेंज फॉर आवर मीडिया, राइट? अब इसके अंदर इफ यू राइट अ CSS ना, that's gonna be applied whenever your screen hits these ranges, right? Again वो जो conflict वाली बात की थी ना कि if things does not conflict that won't be applied, वही यहाँ पे apply होगा. So let's say कि whenever this thing hits ना, मुझे अपना columns decrease कर देना है from 4 to 3. तो what I'll do is I just have to update this piece of code, सिर्फ इतना सा update करना है. तो what I'll do is I'll access content container, I'll write dot content container, and उसके अंदर I'll write this property, and इसमें जाके I'll write 3. I need 3 columns with 1 fraction. ठीक, now let's go and check our screen out. For now, what's the width? It's 980 pixel by 670 pixel. So let's say if I keep on decreasing the maximum width below 9, ठीक, 9 के नीचे लाते ही, are we now creating 3 columns? Update कर दिया, responsive बना दिया, right? If I keep on making it small, जैसे ही ये width 550 pixel hit करेगा, right, it will get back to its original shape, right? तो जैसे इसने 550 hit किया, it's getting back to its 4 column space. तो अभी क्या करेंगे, will apply one more range, right? हम क्या बोलेंगे, @media
for all screens, I need another range which basically has a maximum width of 550 pixel. So 549 pixel. देख जैसे ही maximum width 549 hit होता है and minimum width is gonna be 0 pixel. तो 500 से लेके कोई भी छोटे स्क्रीन पे what I want to do is कंटेंट कंटेनर में जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दिख रहा है ना आपको उसको रिपीट कर दो बट नाउ आई जस्ट वांट टू शो 2. ठीक तो अभी क्या होगा इफ आई जूम इट इन अ बिट जैसे ही मैं 550 का हिट करूंगा राइट इफ आई मेक इट स्मॉलर देन दैट विल सी कि नाउ आई जस्ट हैव 2 कॉलम्स राइट इफ आई कीप ऑन मेकिंग इट स्मॉलर इट विल स्टिल बी देयर. उसके बाद आप रेंज ऐड कर सकते हो फॉर वन कॉलम ऑल्सो राइट. तो आर वी क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट राइट. व्हाट अबाउट नैवबार. नैवबार में हमने फ्लेक्स लगा रखा है तो वी कैन फिक्स इट बाय अप्लाइंग रैप राइट. तो लेट्स से कि नैवबार कहाँ गया नैवबार कंटेनर लेट्स पिक नैवबार कंटेनर एंड डॉट navbar कंटेनर एंड जैसे ही अप्लाई हो रहा है ना आई विल से कि फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू रैप तो यू स्टार्ट रैपिंग थिंग्स. ठीक ठीक सो इफ आई गो अभी इट्स गेटिंग रैप राइट जैसे जैसे स्क्रीन शो करता जा रहा है राइट. और लेट्स से इफ यू वांट अप्लाई अ ग्रिड नाउ राइट जैसे ही स्क्रीन छोटा होता जा रहा है अब आपको ग्रिड अप्लाई करना है तो यू कैन वेरी इजीली डू दैट. यहाँ पे जाके इसको एंड राइट फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड राइट डिस्प्ले ग्रिड लिखो एंड इन हियर यू कैन राइट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड रिपीट 4,1 फ्रैक्शन. ठीक बट अगेन वो साइजेस का थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो दैट्स देयर राइट. तो वी हैव अप्लाइड इट फॉर मीडियम स्क्रीन तो जैसे मीडियम स्क्रीन हिट होगा विल सी कि दैट इज देयर राइट. इसमें जाके यू कैन ऑफ कोर्स राइट गैप्स. So let's say मैं जाके लिखता हूँ gap is gonna be of 40 pixel and same thing let me just copy this entire thing paste करते हैं and अभी मुझे क्या चाहिए जैसे ही उसको hit कर रहा है let's make this thing 3 pixel 3 on each right. So yeah that we can चलो so this is there and जैसे ही screen छोटी होती जाएगी we'll make it as 3 राइट. तो अगेन रिस्पॉन्सिवनेस पूरा आपके ऊपर है हाउ एवर यू वॉन्ट इट यू कैन डू इट. ठीक फ्लेक्स रैप लगाना है फ्लेक्स रैप लगाओ उसका पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज करना है ओरिएंटेशन चेंज करो. योर इमेजिनेशन इज योर बॉर्डर. ठीक जितना इमेजिन करोगे यू कैन क्रिएट स्टफ लाइक दैट. ठीक मीडिया वेरी क्लियर है हाउ यू कैन मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव इज दैट क्लियर एवरीवन किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी. Take how to adjust font size according to media. If you want to adjust font size according to media ना use rem or em for that. take pixel के बजाय rem और em यूज करना. go and find out in mdn कि rem और em क्या होता है. you'll see कि rem is basically 16 pixel equals to 1 rem and all. वो basically थोड़े dynamic होते हैं for text so you can go and check that. ठीक है ठीक है. So now if I ask you guys to pick any layout and create it, can you do that? Easy है. Now that we know flex and grid, anything is possible in HTML. ठीक चलो अब थोड़ी सी डेकोरेशंस भी होती है that is basically in your pseudo elements and pseudo classes. It was given in notes. Have you guys read it? Media queries हाँ यही है media queries pseudo classes pseudo elements किसी ने चेकआउट किया नहीं. ठीक है. so let's say there are multiple things which are called pseudo classes. so let's say कि if I whenever I hover on this button right I want this button the color to be changed. so what I'll do is I'll use something which is called pseudo classes. ठीक. so again back in here a small difference between pseudo classes and pseudo elements. कलेक्टिवली इन दोनों को सूडो सेलेक्टर बोलते हैं बट सूडो क्लास रिप्रेजेंट होते हैं विद अ सिंगल कोलन वेयर सूडो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं विद अ डबल कोलन. ठीक. सो वी आर गोना यूज अ सूडो क्लास व्हिच इज कॉल्ड hover. ठीक. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो बैक इन माय वेब पेज 1 एंड यहाँ पे जाके
I'll go and pick this button. So मैं क्या बोलूँगा, डॉट nav bar container, उसके अंदर बटन, एंड उसमें आई वांट टू अप्लाई a property which is called hover. तो अभी क्या होगा, whenever you hover over this button ना, hover का मतलब समझते हैं, whenever you put your mouse over this thing, that thing will get applied, right? तो let's say जैसे ही मैं उसके ऊपर hover कर रहा हूँ ना, I want my background color to be changed with aqua. राइट, सो लेट्स से इफ आई गो एंड हवर ओवर इट ना, अभी क्या होगा, अभी ये बटन का जैसे ही हवर करूंगा, दैट बैकग्राउंड कलर विल बी एक्वा, राइट? उसी तरीके से लेट्स से इफ आई वांट कि जब मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ, राइट, नॉट ओनली हवर करने पे बट बटन को प्रेस करने पे आई वांट समथिंग टू अप्लाई, मैं क्या कर सकता हूँ, रादर देन हवर आई गो एंड यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एक्टिव, राइट? तो मैं जाके लिखूंगा एक्टिव, एंड जब भी एक्टिव कर रहा हूँ ना, आई वांट द बैकग्राउंड कलर टू चेंज विद टमेटो ही रखते हैं, बट लेट्स पिक्स अ बिट इजियर शेड, तो थोड़ा कम शेड लेते हैं, समथिंग अराउंड दिस, राइट? आई विल ड्रैग इट, ओके, समवेयर इन हियर, एंड मुझे क्या करना है, आई विल गिव इट अ बिट पैडिंग, तो थोड़ा ज्यादा पैडिंग देंगे. फॉर नाउ वी हैव गिवन इट 5 पिक्सल टॉप एंड, तो we will be giving 6 pixel and 9 pixel. ठीक, so now whenever I'll click on this button ना, I'll see कि we are changing the size. ठीक है, तो there are multitude of pseudo classes and pseudo elements जो important है. I have mentioned it over your notes जाके एक बार read करोगे तो you'll get an idea कि कितने सारे pseudo elements and pseudo classes है, right? I would recommend एक चीज जाके चेक करना, which is nth child or nth element, right? It comes under pseudo classes and it's a important thing. nth child, nth element, ये चेक करना. ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे गाइस? बाय नाउ यू शुड बी फेमिलियर विद नोट्स. एलएमएस पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखती है ना, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे, यू विल बी एबल टू सी द नोट्स. ठीक, ठीक. इन @media all in place of all, what other keywords can we write? एमडीएन पे जाओ, मीडिया क्वेरीज लिखो, राइट? वहां पे जाके सब कुछ मिल जाएगा. कौन कौन से डिवाइस का टाइप लिख सकते हो, क्या लिखना है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू एक्सेस इट, राइट? सब कुछ मिल जाएगा. इट कैन बी स्क्रीन, इट कैन बी प्रिंट. ये देखो, मीडिया टाइप्स पे जाओगे तो यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग. ठीक, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन. ठीक, एंड डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. सो कैन वी अप्लाई दीज थिंग्स इन आवर ई-कॉम वेबसाइट्स एंड क्रिएट प्रोजेक्ट्स? अब बना सकते हैं, कोई भी ई-कॉम वेबसाइट आ जाए, वी नो हाउ टू अप्लाई थिंग्स, राइट? That's how you can do it. And now you even know कि how you can make things response. ठीक है, ठीक है. All right. Now एक और छोटी सी चीज, are you guys familiar with GitHub or not? Yes या no में बताओ. Okay. Okay, so some of you are, some of you are not. So I'm pretty sure we have to cover GitHub also. So let's do one thing. Let me sign in GitHub and let me reshare it again. Okay, so just give me a second. I'll sign in and I'll reshare my screen. हाँ, इसमें स्क्रीन विजिबल गाइस, कैन यू सी माय गिटहब? ये दिख रहा है सबको, एवरीवन? ठीक है. सो वंस यू गो ऑन गिटहब ना, you will see a option which says new, right? तो गिटहब इज बेसिकली लाइक अ गूगल ड्राइव फॉर योर कोड्स. ठीक, तो अपने कोड को अगर बैकअप करना है, स्टोर करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, तो यू यूज गिटहब फॉर इट. इसके अंदर वी क्रिएट फोल्डर्स विच आर कॉल्ड रेपोजिटरीज, राइट? तो हम छोटे छोटे फोल्डर्स बनाते हैं जिसमें अपना कोड पुश करते हैं एंड उनको बोलते हैं रेपोजिटरी. सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन न्यू, राइट, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विच सेज कि रेपोजिटरी बनाना है, राइट? तो ना आई वांट टू क्रिएट अ रेपोजिटरी, आई डोंट वांट एनी टेम्पलेट, तो आई वोंट बी पिकिंग एनी टेम्पलेट. उसके बाद एक ऑप्शन आता है चूज अ ओनर.
सो फॉर नाउ दिस इज माई प्राइवेट रिपोजिटरी, जैसे आप लोग बनाओगे तो इट डिपेंड्स, आप मसाई को सेंड कर रहे हो डेटा कि आप खुद को कर रहे हो. लेट्स से कि फॉर नाउ आई एम पिकिंग माई सेल्फ एज द ओनर एंड आई विल राइट अ रिपोजिटरी नेम. सो लेट्स से इफ आई एम राइटिंग कैप crash, right? So now this repo will be created with this name. I can choose two option, या तो मैं उसको public रखूंगा या private रखूंगा, and I'll add a readme file. उसके बाद I'll just simply create the repository. ठीक, तो अभी क्या होगा, now I'll be able to see this repo. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू एक्सेस दिस रिपोजिटरी ऑन आवर कंप्यूटर. लेट्स से आई वांट सेंड दिस VS कोड वाला कोड इन माय गिटहब. तो क्या करूंगा, आई विल बी बेसिकली कॉपीइंग दिस रिपोजिटरी इन माय सिस्टम. तो वो करने के लिए यू वांट अ एप्लीकेशन व्हिच इज कॉल्ड गिट इन योर सिस्टम. सो डाउनलोड दिस गिट, इसको इंस्टॉल करो, एंड वंस यू हैव डन दिस ना, विल बी एबल टू सी इफ यू ओपन टर्मिनल, राइट. अगर टर्मिनल खोलोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि इन टर्मिनल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यू विल बी एबल टू सी गिट बैश का ऑप्शन. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस गिट बैश, नाउ क्या होगा, नाउ आई कैन एक्सेस गिटहब फ्रॉम माय सिस्टम ऑल्सो बाय यूजिंग गिट, जो कि एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है ये वाला. ठीक, नाउ वंस यू हैव डाउनलोडेड इट, आराम से लेक्चर के बाद करना, बट एक बार डाउनलोड कर लोगे तो व्हाट यू हैव टू डू इज, प्रोसेस समझ लो बस. कोड पे क्लिक करो एंड ये वाली लिंक कॉपी करो. ठीक, एक बार ये लिंक कॉपी कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आओ एंड राइट गिट क्लोन. एक कमांड लिखोगे जिसका मतलब है गिट क्लोन. व्हाट डू वी मीन बाय क्लोन? क्लोन करने का क्या मतलब होता है? कॉपी करना. करेक्ट. सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज लाइक डायरेक्टरी और रेपोजिटरी अ फोल्डर ऑन गिटहब, जो कि हम अपने लोकल सिस्टम पे कॉपी करना चाहते हैं. कैसे कॉपी करेंगे, गिट क्लोन और उसके बाद वो लिंक पेस्ट करना. सो इफ आई प्रेस एंटर, राइट, you'll सी कि मैंने वो डायरेक्टरी कॉपी कर ली. राइट, ये डायरेक्टरी कॉपी कर ली. ठीक, अगर मैं उस डायरेक्टरी में अपना ये फोल्डर भेजना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट इन देयर. ठीक, तो अभी क्या हुआ, मैंने अपने सिस्टम से इस फोल्डर में कुछ चेंजेस किए, मैंने एक नया फाइल फोल्डर ऐड किया उस रेपोजिटरी में अपनी तरफ से. राइट, तो अभी ये सब लोकल सिस्टम में हो रहा है. हैव वी रिटन एनीथिंग हियर जो कि इंटरनेट पे उसको अपडेट करेगा, वेबसाइट पे उसको अपडेट करेगा? कुछ भी लिखा है ऐसे, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? नहीं, राइट. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, यहाँ पे वो अपडेट विजिबल नहीं होगा. टू फिक्स दैट वी हैव टू राइट थ्री स्मॉल कमांड्स, राइट. पहला होगा गिट एड, राइट, गिट एड स्पेस डॉट. ये बेसिकली क्या करेगा, आपके चेंजेस को स्टेज कर देगा या फिर रेडी करेगा इन चेंजेस को गिटहब में डालने के लिए. राइट, तो इफ आई प्रेस एंटर ना, ये says git, let me check, git dash list. Okay, let me open it then. Cap and crash course. ठीक है, तो बेसिकली हमें इस फोल्डर के अंदर विजिट भी करना है, राइट. तो अभी तक हम लोग ये कैप वाले फोल्डर में थे, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो ये रहा वो फोल्डर. ठीक, अभी फिर से लिखते हैं गिट एड. तो अभी क्या हुआ, वो चेंजेस स्टेज हो गए, वो रेडी हो गया हम अपना गिटहब में डालने के लिए. उसके बाद क्या करेंगे, विल बी राइटिंग गिट कमिट. तो बेसिकली हम कमिट करना चाहते हैं इस रेपो में. आई राइट अ -m. इसका मतलब कि मैं कमिट करने से पहले एक मैसेज ऐड कर रहा हूँ, क्या कमिट कर रहा हूँ, राइट. व्हाट एम आई ट्राइंग टू कमिट. सो लेट्स से इफ आई राइट इन हियर एडेड फीचर्स फॉर डे 2. ठीक, so if I press enter, I'll be creating these commits and I'll be writing a message in here. And finally मैं क्या लिखूंगा, I'll write git push origin. Basically इसके बाद मैं ऐड करूंगा कि कहाँ पुश करना, तो I want to push it in main. So I'll write git push origin main. If I do that ना, मैं क्या करूंगा, I'll be sending everything in my GitHub. ठीक, so if I go back in here and if I refresh it,
Now you guys will see कि वो day 2 वाला folder I have added in my GitHub, and in here everything is now accessible. So now I have stored everything in my GitHub, and it was easy. All I have to do is I have to do few simple steps. यहाँ पे notes में जाके लिख भी देता हूँ वो steps क्या क्या है. First thing first, I have to get that directory, folder या repository in my local system. तो कैसे करेंगे, क्या command है? It was git clone and then URL for that repository. URL कहाँ से आता है? कोड पे क्लिक करो, ये रहा URL, कॉपी कर लो यहाँ से. इतना क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट स्टेप क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर? एटलीस्ट गिट क्लोन करना आ गया एवरीवन? ठीक. Then the next step is you will be having that folder. Go in that folder, right? Just जाओगे कैसे? Just write cd, and basically cd means change directory, and write your path. ठीक. तो basically इसके अंदर आ जाओ, and then उसके बाद once you have made the change, you have to write three things, right? Git add dot git commit dash m your message, your custom message, and finally git push origin main, right? For now you guys will be pushing in main, बाद में there will be branching out and all, वो बाद में करेंगे. अभी के लिए push it in your branch, main branch. So all you have to do is you have to just write these three things and press enter, and you will be done with. आप अपना code push कर दो. ठीक. Again, at first go, of course you guys won't be able to understand it. एक बार push करके देखना. If you are able to do it, that's well and good. नहीं तो your IAs will be there to help you guys. ठीक. If you have doubts, ask them, they'll help. ठीक है. But these are the only 4 commands that you have to remember. That's all. ठीक है. ठीक है. तो shall we do a quick recap? क्या क्या पढ़ा हमने? So we basically started with level of elements. Level of elements. How many levels are there in HTML? 2 level, right? We have inline and we have block level element. Right? Inline है और block है. उसके बाद inside that we learned कि inline level element में width and height is not respected. Right? It follows the width and height of its content. Inline के अंदर. Block level, it respects it. ठीक. तो inline was different in 2 fashions. Everything was coming in same line, plus it does not respect width and height. ठीक. उसके बाद we learned कि how we can make a block level element act somewhat like inline level element, right? तो we basically learned about display flex, right? Display flex को कहाँ पे use करोगे? 1 dimensional layout में कि 2 dimensional layout में? 1 dimensional layout, right? It's majorly used in 1 dimensional layout, right? वहीं पे if I go for display grid, how will I be using this thing? For 2 dimensional layout, right? अभी flex के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. By default flex का डायरेक्शन क्या होता है guys? Flex का जो डायरेक्शन है by default क्या होता है? It's row, right? By default row होता है. Can we change it back to column? So we have row, we have column, we have few more like row, reverse, and column because not terribly important. Row and column is something that we have to remember. ठीक. उसके बाद based on row and column, was our main axis and cross axis changing? Right? But thumb rule क्या है? Main axis will always follow the flex direction. So if we have written row, main axis will be horizontal, and if we have written column, main axis will be vertical. Basically column follow करेगा, ये row follow करेगा based on what direction we have written. Right? उसके बाद the main axis was being followed by a property which was called justify content. Yes or no? Right? And इसके अंदर you have seen multitudes of feature from flex start, end, center, space around, space evenly, everything. Try करोगे, you'll get a hands-on experience. ठीक है? तो it's on you to try. Cross axis पे we had a property which was align items. है ना? है ना? So that was our flex, right? उसके बाद if
our content inside, like flex item inside a container, flex container के अंदर we have flex items and that item has greater width than the container itself. तो क्या वो overflow होगा or will it wrap itself? छोटा कर लेगा, it will make itself smaller, squeeze कर लेगा, shrink कर लेगा. It will shrink itself, it will wrap itself, right? Why is it so? Because we have a property which is called flex wrap, and by default wrap is there. To fix that we can write no wrap. ठीक, उसके बाद for 2D layouts we had display grid, right? And in that we had grid template की property, and in that grid template we had grid template columns and we had grid template rows, right? Now if I have to create 4 columns which are of exact same size, do I have to write 100 pixel 4 times, or can I write repeat number of columns, let's say 4, and I can write pixel or percentage or fraction, कुछ भी लिख सकता हूँ. Which one is preferred, fraction, percentage या pixel in grid? Fraction. Why? Because this thing is much more dynamic. ठीक, sizes के लिए. ठीक, same goes for rows, right? Now columns is gonna basically आपके child elements का, it's gonna control the width, and rows are gonna control the height. Remember? Now if I want to give gap in between the boxes, I'll be writing gap, and इसके अंदर either I can go with follow this structure or I can go follow top, bottom, left, right. ठीक, you guys already know about this from margin and pad. ठीक, finally we learned about much better way to make things dynamic, which was @media, right? उसके बाद we write the type of screen that we want. For now we are always gonna need all, so I'm gonna write all. उसके बाद I'll be writing and, और उसके अंदर I'll be writing whatever max width I want and whatever minimum width I want. And inside this I can write any CSS जैसा भी I want to make it responsive. ठीक, so that's what we have learned so far. That's your basic HTML. ठीक, now you can create any layout that you ठीक. Plus we learned about something which was called pseudo classes and pseudo elements. So again pseudo class और elements में simple सा difference है. Pseudo class जो है ना, they look different. कैसे different दिखते हैं? They are gonna start with single colon. वहीं पे pseudo elements are gonna start with double colons. तो ये क्यों है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. ना देयर आर मल्टीपल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. नोट्स में इंपॉर्टेंट वन मेंशन किए हैं, बट यू गाइस कैन चेक एमडीएन फॉर right, but do check out notes. उसमें I have just mentioned the important ones that you'll be using in a regular basis. ठीक है. So yeah guys, that's pretty much it. I hope कि you were able to understand कि layout कैसे बनाना है. right. ठीक है. So with this we are concluding our HTML and CSS. Next lecture से we'll be starting our JavaScript now. ठीक, तो today's doubt class is mixed up with updated batch. I'm not sure, maybe your IA or EC can clear that. I'm not really sure about that. ठीक, चलो. So again guys, notes access करने हैं, you can find it in your recording के नीचे ही रहता है, so you can just access it there. Just give me a second, stop the recording.